बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 51 है रिगार्डिंग टोफल सीरीज़ फॉर द बिगनर्स। आज हम इसमें कॉज कनेक्टर्स को स्टडी करेंगे। सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द लेसन। कॉज कनेक्टर्स में हम स्टडी करेंगे कि सेवरल ग्रामेटिकल डिवाइसेस जिसमें हम कॉज को शो करते हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग ऑफ विद अ वर्ड बिकॉज। नाउ बिकॉज विच इज़ ओनली फॉलो विच इज़ डज नॉट फॉलो बाय ऑफ, विच इज़ ओनली बिकॉज, इसको हमेशा फॉलो करेंगे बाय द क्लॉज। बिकॉज के वर्ड को जब खाली सिर्फ बिकॉज होगा उसको हमेशा क्लॉज के से फॉलो किया जाएगा। एंड व्हाट क्लॉज इज़, अ क्लॉज स्टैंडिंग अलोन इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस एंड बेयर इन माइंड अ कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। सो फॉर एग्जाम्पल द सब्जेक्ट, आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसमें आपके पास बिकॉज है एंड दैट शुड बी फॉलोड बाय a clause, and the clause is like subject verb or their verb and subject. So a clause should is alone, by standing alone is a complete sentence by itself. फर्दर मोर आपके पास बिकॉज के साथ हम एट टाइम्स बिकॉज ऑफ भी इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप बिकॉज ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो दैट ऑलवेज बी फॉलोड ओनली बाय अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। देयर मस्ट नॉट बी अ कॉन्जुगेटेड वर्ब, राइट। जब आप बिकॉज ऑफ इस्तेमाल करें तो या तो वो सिर्फ नाउन से फॉलो किया जाएगा या नाउन फ्रेज के साथ। एंड बेयर इन माइंड कि देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्जुगेटेड वर्ब व्हाटसोएवर। सो आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा उसमें बिकॉज ऑफ फॉलोड बाय अ नाउन फ्रेज। बिकॉज ऑफ इज़ ऑफन इंटरचेंजेबल विद एक्सप्रेशन ड्यू टू। बिकॉज जब हमने पहले स्टडी किया था तो दैट इज़ ऑल स्टैंडिंग अलोन स्टफ थिंग, लेकिन जब आप बिकॉज ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो दिस कैन बी समटाइम इंटरचेंजेबली यूज विद द वर्ड और द एक्सप्रेशन ड्यू टू। सो बिकॉज ऑफ और ड्यू टू एक्सप्रेशन को आप इंटरचेंजेबली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसकी कुछ एग्जाम्पल्स को स्टडी कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज़ जैन वॉज वरिड बिकॉज इट हैड स्टार्टेड द रेन। Now this word because is followed by it which is subject and had started the rain, ये आपका verb है। तो this is a complete sentence all by itself with a stand alone sentence है जिसमें आपके पास subject और verb है। अगर हम इस पूरे sentence को start में नहीं भी पढ़ते तो it had started the rain, तो this all sentence is a separate with structure and with the verb and subject in it. So because हमेशा follow होगा with a clause। सेकेंड एग्जाम्पल है बिकॉज ऑफ की जिसमें जैन वॉज वरिड बिकॉज ऑफ द रेन। सो नाउ आपने बिकॉज ऑफ लिखा है तो यू जस्ट ओमिट एवरीथिंग एंड हैव द नाउन फ्रेज विच इज़ द रेन। It remember that because of is only followed by a noun phrase with no conjugated verb whatsoever। और because of को हम due to से भी interchange कर सकते हैं। तो अगर this sentence can also be referred as Jen was worried due to rain। So that's how you can mention them. Again the second example is the students arrived late because there was a traffic jam। So again was is a verb and the traffic jam is a subject itself. So the whole there was a traffic jam is a stand alone sentence, so this is the clause। So because is followed by a clause। However the students arrived late because of the traffic jam। So अगर आप simple the traffic jam बोलते हैं तो this does not make any sense because it's just a noun phrase। So because of is followed by the noun phrase, और अगर हम because of को due to से replace करें, so the students arrived late due to the traffic jam, so the sentence still makes sense। Third example is we have to cut down on our driving because there is an oil shortage। So this clause which is there is an oil shortage is still a standalone, makes sense। is verb and oil shortage is a subject and oil is a subject। So because is followed by this clause there is an oil shortage। However to make it to follow it with the because of, we have to cut down on our driving because of the oil shortage। So the oil shortage is a noun phrase here and it's not a clause with no verb conjugation whatsoever। और हम because of को due to से replace कर सकते हैं, यानी कि we have to cut down on our driving because of or due to the oil shortage। It is also possible for the cause clause to begin the sentence। समटाइम्स आपका जो कॉज क्लॉज है विच इज़ लाइक बिकॉज या बिकॉज ऑफ, हम इसको इस तरह भी एडजस्ट कर सकते हैं कि आपका जो है वो सेंटेंस से ही स्टार्ट हो रहा हो, सेंटेंस बिकॉज से ही स्टार्ट हो रहा हो। बिकॉज ऑफ द रेन वी हैव कैंसल द पार्टी। सो अगैन आपने बिकॉज ऑफ को सेंटेंस से स्टार्ट किया और येट द सेंटेंस स्टिल मेक द सेंस। सो द कॉज क्लॉज जो ये है यानी कि बिकॉज या बिकॉज ऑफ, इससे हम सेंटेंस को भी स्टार्ट कर सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट बिकॉज एंड बिकॉज ऑफ क्लॉज सेंटेंस, कॉज सेंटेंस। अब हम इसके सब एग्जाम्पल्स को एक्सरसाइज को करेंगे। इस एक्सरसाइज में यहाँ पर 10 क्वेश्चंस हैं। 5 क्वेश्चंस आर हियर ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। जस्ट पॉज योर स्लाइड हियर वीडियो हेयर और आप इन ब्लैंक्स को फिल करें ईदर विद द बिकॉज
और बिकॉज ऑफ, और इसको आप इसको जज कैसे करेंगे? विद द फॉलोइंग, इधर इट्स आपका क्लॉज है, सेंटेंस, या इसके बाद आपका नाउन फ्रेज है, उसकी बेसिस पे आप बिकॉज ऑफ या बिकॉज को हेड यूज़ करेंगे. एंड द रेस्ट ऑफ द 5 क्वेश्चंस आर हियर फ्रॉम 6 to 10. अगेन इसमें आपके ब्लैंक्स हैं जिसको आपने बिकॉज या बिकॉज ऑफ से एज पर अप्रोप्रिएट मेंशन फिल करना है. एंड इफ़ यू आर डन विद इट, हम इसको अब जंप करते हैं एक्सरसाइज को आंसर पे. The first question was, it was difficult to deliver the letter because the sender had written the wrong address on the envelope. Now this rest of the sentence is a clause which has the subject and the verb. So it should have a because in the start, no because of. Because it's a sentence, it's a clause. Second question is, we decided to leave early because the party was boring. And the party was boring is a subject and verb, everything here, so it's a clause. So इससे पहले हमेशा because आएगा. So question 3, rescue attempts were temporarily halted because of the bad weather. So the bad weather is a noun phrase, so इससे पहले because of आएगा. Question 4, they visited their friends often because they enjoyed their company. So they enjoyed their company is a clause with the subject and verb, so it should be followed preceded by the word because. Question 5, Paul cannot go to the football game because of his grades. So his grades is a noun phrase. So because his grade does not give you whole sentence story, so इससे पहले हम because of देंगे. But the words like they enjoyed their company, this is the whole main clause with subject and verb जो कि हमको stand alone sentence है, so इससे पहले हमेशा because आएगा. Question 6 is, Marcella was rewarded a scholarship because of her superior scholastic ability. It's just the noun phrase with no verb whatsoever, so it will be preceded by the verb because of. The question 7 is, nobody ventured outdoors. Nobody ventured outdoors because of the hurricane warnings. Again, this is the noun phrase, so it will be preceded by the word because of. Question 8, we plan to spend our vacation in the mountains because the air is purer there. So the air is purer there has subject with the verb, and this is a main clause, is a clause itself with a standalone sentence, so isliye it should be preceded by the word because only. Then question 9, we have to drive around the bay because the bridge was destroyed in the storm. So the bridge is subject followed by a verb destroyed, so it's a standalone sentence, it's a clause, इसलिए इससे पहले हम because को mention करेंगे. The question 10 is, the chickens have died because of the intense heat. So the intense heat is just the noun phrase, इसलिए इससे पहले हम because of को mention करेंगे. I hope this all makes sense. If it does, subscribe to my channel, like and share with your friends and family. Thanks for watching.